So dear students, welcome again in this lecture. As we have already discussed photosynthesis in detail, we have read various subtopics of this photosynthesis. Now last topic which left is today, that is called as factors affecting rate of photosynthesis. So this is the last topic of this photosynthesis, or we can say chapter of this of physiology. Factors affecting the rate of photosynthesis. क्योंकि ये photosynthesis जो है आप सब we as all we know that photosynthesis is that process on which all life depends whether indirectly or directly for food material. सब हम जानते हैं कि whole life जो है ये photosynthesis पर depend करती है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस मेन प्रोसेस है जिससे हम फूड मटेरियल हासिल करते हैं. सो वी कैन से होल लाइफ डिपेंड्स अपॉन दिस फोटोसिंथेसिस. सो देन वी शुड नो द फैक्टर्स which affect the rate of photosynthesis, or we should know what are the factors. If we increase those factors, the rate should become increased, or if we decrease, what will be the consequence on this process. तो हमें ये पता होनी चाहिए कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर ये फोटोसिंथेसिस जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड करती है. सो एज देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स which affect the rate of photosynthesis. One is called as internal factors. Internal factors. So first is called as internal factors. Second is called as external factors. प्लांट के कुछ अपने भी फैक्टर हैं अंदर से जो इस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर इसका असर डालते हैं, या हम कहेंगे इट इज इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स. सो दोज आर कॉल्ड एज इंटरनल फैक्टर्स. तो उसके साथ साथ एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स भी कुछ हैं, या आउटसाइड फैक्टर्स which affect the rate of photosynthesis, they are called as external factors. मगर फोटोस या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर डिस्कस करने से पहले मैं बताऊंगा कि ये एक साइंटिस्ट था, बायोलॉजिस्ट, ही इज कॉल्ड एज साइंटिस्ट वाज अ साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट. उसने कुछ पॉइंट्स दिए रिगार्डिंग द रेट of a process, any process which is governed by a number of factors. So उसके बाद से साइंटिस्ट ने कुछ पॉइंट्स दिए. First, those points are called as cardinal. Those points are called as cardinal points. Cardinal points. There are three types of cardinal points as given by scientists. One is called as minimum. First is called as minimum. Second is called as optimum, and the third one is called as maximum. So these are called as cardinal points which were given by this scientist. तो उसने क्या बताया, इसने यहाँ बताया अगर हम कोई प्रोसेस ले लेंगे तो अगर वो बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो प्रोसेस, तो अगर हम ये फैक्टर सपोज ए फैक्टर, अगर इसका मतलब ये फैक्टर ए लेंगे तो उसका मकदार हम पहले बहुत ही कम दे देंगे, फॉर एग्जांपल मिनिमम क्वांटिटी. सो द रेट विल गेट स्टार्टेड एंड द रेट विल बी एट लो एट दिस मिनिमम लेवल. इफ वी इंक्रीज द रेट the process will go increase and increase, or we can say the rate of the process will go increase. At optimum there will be best rate of that process. So अगर हम उसके बाद भी उस फैक्टर को इंक्रीज करेंगे that beyond its maximum, so it will cause decline of that process, so the effect will get reversed. So these are called as cardinal points. Every factor of any process shows its effect on that process according to this minimum, optimum as well as maximum level. If we give the minimum value of that factor, so the rate will be low. If we provide the optimum level, the rate will be best. But if we go beyond the maximum, so there will be decline in that process. So these are called as cardinal points which were given by scientists. तो उसके बाद और एक साइंटिस्ट था
उसका नाम था लिबिगस, लिबिगस उसका नाम था लिबिगस। तो वो भी एक बायोलॉजिस्ट था, उसने एक लॉ दिया था दैट इज कॉल्ड एज लिबिगस, लिबिगस लॉ ऑफ मिनिमम, लिबिगस लॉ ऑफ मिनिमम। यानी एज फार एज फैक्टर्स और कंसर्न, कोई भी प्रोसेस हो उसके फैक्टर्स पर कौन सा कंट्रोल करेंगे उस प्रोसेस पे, उसके एतबार से भी उसने एक लॉ दिया है दैट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ लिबिगस लॉ ऑफ मिनिमम। यानी अम दित लॉ इट्स लिबिगस लॉ ऑफ मिनिमम। तो अम क्या वन सपोज देयर इज अ प्रोसेस ए, it is controlled by 3 factors. Suppose there are 3 factors A, 1, 2 and 3, so they affect this process A. तो उसने ये कहा अगर this process, suppose this process A, if it is governed by number of factors, so the rate determining factor will be that factor whose value is minimum. यानी उसने क्या बता दिया, लिबिग्स ने बता दिया कि अगर कोई प्रोसेस इट इज गवर्न बाय और कंट्रोल बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी बहुत से फैक्टर हैं जो इस पर असर करते हैं इस प्रोसेस पर, तो रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर जो होगा वो वही होगा जिसकी क्वांटिटी या मकदार जिसकी हो वो मिनिमम हो, तो उस पर वो प्रोसेस की रेट जो है डिपेंड करता है। दैट्स कॉल्ड एज लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम। तो उसके बाद इस लॉ को मॉडिफाई किया और एक साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने, ही इज कॉल्ड एज Blackman's law of limiting factors. Using Liebig's law of minimum was you got modified. It was modified by another scientist or another biologist. He is called as Blackman's law of limiting factors. Blackman's law of limiting factors. Blackman's law of limiting factors उसने दिया। तो ब्लैकमैन ने इसमें क्या कहा, उसने कहा अगर एक प्रोसेस, फॉर एग्जांपल हियर इज प्रोसेस ए, अगर यहाँ उस पर बहुत से फैक्टर्स है, यहाँ पे देयर आर 4 फैक्टर्स which affect this process, there are 4 factors suppose which affect this process, तो उसने कहा ये प्रोसेस की रेट जो है it depends upon the factor whose value is at minimum, यानी प्रोसेस जो है, कोई भी प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, रेस्पिरेशन की बात करें, वो देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेस, तो उसने यही बता दिया कि अगर ये प्रोसेस जो है अगर इट इज कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो रेट ऑफ जो प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस की रेट जो है वो इन फैक्टर्स में उस फैक्टर पर ज़्यादा मुनिसार या डिपेंड करती है जिसका वैल्यू मिनिमम हो। सो दिस इज कॉल्ड एज ब्लैकमैन's लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अगर हम इसको स्टेट करेंगे, स्टेट इज दैट इफ a chemical process, जो एनसीईआरटी में दिया है स्टेटमेंट, इफ a chemical process is controlled by a number of factors, if a chemical process is controlled by a number of factors, the rate of that process depends on the factor whose value is nearest to its value, minimum value, nearest to its minimum value. In a statement I have said here, if a chemical process is controlled by a number of factors, then the rate of that process depends upon the factor whose value is nearest to its minimum. यानी अगर एक प्रोसेस हम ले लेंगे, जहाँ मैंने बताया फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्रोसेस ए आर बी वट एवर मे बी टेकिंग, और फोटोसिंथेसिस की बात हम ले लेंगे, और फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ फोटोसिंथेसिस की बात ले लेंगे, जिस फोटोसिंथेसिस का कंट्रोल बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स हियर, so the rate of this photosynthesis depends upon that factor. For example, there are 4 factors, 1 2 3 4 5 factors are there, so the rate of photosynthesis
depends upon that factor. Out of these four factors, depends upon that factor whose value which we applied is at minimum level. So us par the rate of this process depends on photosynthesis depend करती है. So this is called as law of, this is called as Blackman's law of limiting factors. तो इन्हीं को मद्देनजर हम रखेंगे. तो let us discuss what are the factors which affect the rate of photosynthesis. As I told already that there are two types of factors. There are two types of factors. One is called as internal factor. Second is called as external. Let's first discuss what are the internal factors. As I already told you that these factors are present plant inside the plant. These are the factors of plant itself. ये प्लांट के अपने फैक्टर्स हैं जिस पर ये फोटोसिंथेसिस रेट है डिपेंड करती है. So these include number one leaf. These factors includes number one leaf. Number two, it depends upon chlorophyll. Chlorophyll. Next is chloroplast. Next is pigments. Pigments. Next is orientation. Orientation of leaf to sunlight हम कहेंगे. Next is internal concentration of CO2. So these are called as internal factors. I have them. Number one leaf, number two chlorophyll, number third chloroplast. Pigments are there, orientation of leaf is there, and the last one is internal carbon dioxide concentration. Let us take this leaf first. As we all know that photosynthesis takes place mostly in leaf. And plant में जो main organ है वो leaf ही है जहाँ photosynthesis होती है. तो यहाँ पर और एक फैक्टर मैं भूल गया, that is called as mesophyll tissue. और mesophyll cells you can write down. So leaf की बात हम करेंगे तो leaf is the main organ or main part of a plant in which the photosynthesis takes place. जो mesophyll tissue है उसी leaf में भी होता है. ये chlorophyll, chloroplast, whatever these pigments, they are present in the leaf. So leaf is the main organ in which photosynthesis takes place. तो leaf की अगर हम बात करेंगे, पहले हम लेंगे number of leaves. First, let us discuss the number of leaves. So अगर एक प्लांट पर लीफ का नंबर बहुत ही खासा अच्छा हो तो उसके मुताबिक फोटोसिंथेसिस की रेट भी बहुत अच्छी हो. So first is that number of leaf depends, number of leaf affects the rate of photosynthesis. More the number of leaves, more will be photosynthesis. Second is size. जितना साइज अच्छा खासा हो, जितना साइज बड़ा हो लीफ का, ऑटोमेटिकली उतना ही सनलाइट जो आती है इस पर ट्रैप हो सकती है, उतना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दिस सनलाइट और सन एनर्जी गेट ट्रैप्ड बाय दिस लीफ. सो साइज आल्सो अफेक्ट्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. देन एज. सो एज बहुत ही अच्छा फैक्टर है क्या लीफ का. तो एज, जहाँ तक बात करेंगे एज की, तो एज फार एज यंग लीव्स आर कंसर्न, यंग लीव्स, so they contain rich amount of chlorophyll, they contain rich amount of chloroplast or protoplasmic components, or we can say mesophyll tissue is there present. So there will be more and more photosynthesis. So we can say in young leaves the rate of photosynthesis is best as compared to old leaves. क्योंकि जब लीफ में एजिंग होती है तो ये सब कुछ डिक्लाइन होता है, उसमें फोटोप्लाज्मिक कंटेंट ये सब कुछ डिक्रीज होता है, लीफ सूखने लगता है. तो ओल्ड में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होती है. तो उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा ओरिएंटेशन ऑफ लीफ. ओरिएंटेशन ऑफ लीफ. तो ये लीफ जो है यहाँ पर प्लांट बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल से प्लांट हियर, सपोज से प्लांट, सो दिस इज लीफ. सो ऑटोमेटिकली हम सब ने देखा होगा ये लीफ की डायरेक्शन जो होती है ये लाइट के मुताबिक, लाइट की तरफ होती है. लीफ जब एक्सपोज अपने आप को करता है तो उसका एक्सपोजर हमेशा टुवर्ड्स सनलाइट रहता है. यानी अगर हम कोई भी प्लांट हम अगर बात करेंगे तो लीफ ही इट मीन्स इट, और वी कैन से इट एक्सपोज इटसेल्फ टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट. सो जो ही लीफ की डायरेक्शन या ओरिएंटेशन सनलाइट की तरफ हो तो उसके मुताबिक
more and more solar energy will fall on this leaf. So when more solar energy will fall on leaf, so naturally more solar energy will get trapped by this leaf, so there will be more photosynthesis. So this is called as orientation of leaf. Then there is chlorophyll. So as I already know, there are chlorophyll A, chlorophyll B, or we can say chlorophyll is the main part which traps sunlight or which traps solar energy and then converts into chemical energy. So जो ही chlorophyll अच्छे हों तो उसके मुताबिक फोटोसिंथेसिस भी अच्छी होगी. तो लिहाजा क्लोरोफिल भी जितनी मकदार में क्लोरोफिल अच्छी हो उतनी मकदार में फोटोसिंथेसिस भी अच्छी होगी. तो उसके बाद क्लोरोप्लास्ट. एज आई फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आई टोल्ड यू दैट दिस क्लोरोप्लास्ट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. इट इज, ये कभी कभी एंट्रेंस में क्वेश्चन भी आता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज लीफ. कभी कभी नीट में पूछा जाता है कि the site of photosynthesis is which part of the plant. So that is called as this chloroplast. That's the site for photosynthesis. जब क्लोरोप्लास्ट अच्छा हो, क्लोरोप्लास्ट में ये क्लोरोफिल भी होता है, पिगमेंट्स भी होते हैं, सब कुछ मेसोफिल सब कुछ इसी में होता है. तो it contains enzymes which are needed by this plant for photosynthesis. So all are present in this chloroplast. So जब क्लोरोप्लास्ट अच्छा हो तो उसका मुताबिक फोटोसिंथेसिस वो भी अच्छी होगी उसमें. तो उसके बाद मैंने आपको कहा इंटरनल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हम ये जानते हैं कि ये लीफ जो है इसमें स्टोमेटा होता है, ओपनिंग होती है, जनरली बिलो एपिडर्मिस जो होता है इसका यहाँ पे ओपनिंग होती है. तो थ्रू दिस ओपनिंग गैस एक्शन टेक्स प्लेस, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मेन कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. तो ये स्टोमेटा की जानिब लीफ में दाखिल होता है. तो उसके बाद ये मेसोफिल में चला जाता है. तो मेसोफिल में फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन उसमें जितनी कंसंट्रेशन मौजूद हो उसी के मुताबिक फोटोसिंथेसिस भी होगी. तो अगर इंटरनल कंसंट्रेशन कम हो तो उसके मुताबिक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी लो. सो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट the rate of photosynthesis also depends upon the internal concentration of carbon dioxide. Similar is case mesophil tissue is that part where chlorophyll is present, where pigments are present, and photosynthesis takes place. Or I can say mesophil cells, chloroplast is present, so that photosynthesis takes place. So these are the internal factors on which rate of photosynthesis depends. But these factors depends on number one. The internal, कभी क्वेश्चन आ सकता है, the internal factors depends upon number one predisposition, number one predisposition या genetic इस तरह लिखा genetic predisposition, genetic predisposition number one. Number two growth of plant, number two growth of plant. ये तो जेनेटिक मैकेनिज्म की बात हम करें. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो है ये तो इट इज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम बात करेंगे हर एक फंक्शन जो है जेनेटिकली कंट्रोल. सो अगर जेनेटिकली सेटअप उसका अच्छा हो तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बहुत अच्छी होती है. तो सेकंड इज ग्रोथ ऑफ प्लांट. अगर प्लांट में ग्रोथ अच्छी खासी हो तो उसके मुताबिक फोटोसिंथेसिस भी बहुत अच्छी हो. सो आई टोल्ड यू दैट in nutshell, the internal factors that may be leaf, chlorophyll, chloroplast, pigments, orientation of leaf, or internal concentration of mesophil cells, internal concentration of carbon dioxide. So these are the factors which depend on genetic predisposition as well as growth of plants. So ये factors plant के अंदर होते हैं, plant में पाए जाते हैं, तो उनका इस फोटोसिंथेसिस पर बहुत ही खासा अच्छा असर पड़ता है, जिसके मुताबिक फोटोसिंथेसिस रेट कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है. सेकंड इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फैक्टर्स. एंड सेकंड टाइप ऑफ फैक्टर्स है दे आर एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात हम करेंगे तो देयर आर ए नंबर ऑफ फैक्टर्स. नंबर वन इज इंक्लूड नंबर वन लाइट. नंबर वन इट इज लाइट. नंबर टू it is temperature. Number two temperature. Number third is carbon dioxide. Number fourth it is temperature. Number fifth it is water. So these are
these are the external features. These are the external features which affect the rate of photosynthesis. So let us first discuss this light. As we know, the light is the basic source of energy on which photosynthesis depends. अगर लाइट एनर्जी हो तभी फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अगर टर्म हम ले लेंगे, इट इज दैट प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. सो विदाउट लाइट देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस. अगर हम एक प्लांट को ले लेंगे, छोटा प्लांट हो, फिर हम उसको डार्क में रखेंगे. फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लांट, छोटा प्लांट है, अगर हम इसको डार्क में रखेंगे तो no chlorophyll development will be there. So this plant is called as etiolated. It is called as etiolated plant. कभी-कभी पूछा जाता है ये ऑब्जेक्टिव. यानी अगर हम एक प्लांट को डार्क में रखेंगे, छोटा प्लांट ले लीजिए, फिर इसको डार्क में ले लीजिए, तो उसमें क्लोरोफिल डेवलपमेंट नहीं होगा, फिर तो ग्रोथ भी नहीं हो सकता है. लिहाजा ग्रोथ किसकी तो पहले बात हम डेवलपमेंट ठीक ठाक ही. तो अथ प्लांट दिस इज कॉल्ड एज etiolated plant. ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि द प्लांट kept in dark, it is called as, or what will happen to this plant if we kept it in dark. So it is called as etiolated plant. तो फर्स्ट फैक्टर एज आई टोल्ड यू दैट इज लाइट. तो लाइट जो है वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. ये 3 तरीकों से इस प्लांट पर असर डालती है, या फोटोसिंथेसिस पर असर डालती है. तो पहले हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी ऑफ लाइट. सेकंड इज कॉल्ड एज क्वांटिटी ऑफ लाइट, या क्वांटिटी के बजाय हमें यहाँ लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो थर्ड लेंगे दैट इज कॉल्ड एज ड्यूरेशन ऑफ लाइट. So these are 3 points or 3 ways by which the light affects this rate of photosynthesis. जहाँ तक क्वालिटी की हम बात करेंगे, अगर देखते हैं जो लाइट है, जो हम देखते हैं लाइट, it is made up of 7 wavelengths or that is called as wavelength. तो अगर आपको याद होगा कि मैंने पहले ही एक्सपेरिमेंट जब हमने पढ़े हैं, तो उस वक्त मैंने आपको बता दिया वो एंगलमैन जो बयालॉजिस्ट था, उसने क्या किया, उसने एक प्लांट में दैट वाज एल्गी कॉल्ड एज क्लेडोफोरा. ही केप्ट दिस क्लेडोफोरा in an aerobic bacterial suspension. यानी बनो आप बन के एरोबिक बैक्टीरिया सस्पेंशन. तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या हो गई, एरोबिक बैक्टीरिया स्टीम यम जन दे नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, सो दे आर कॉल्ड एज एरोबिक बैक्टीरिया. तो उन्हीं का सॉल्यूशन उसने बना दिया यहाँ पे. तो उसके बाद ये क्लेडोफोरा एल्गी जो था, उसने उसको इसमें रखा, इस सस्पेंशन में, दिस एरोबिक बैक्टीरिया सस्पेंशन. उसके बाद यहाँ पे उसने लाइट स्कैटर की. लाइट उसने यहाँ लाइट, यहाँ से लाइट आ गई, तो उसने इसको स्कैटर किया. स्कैट तो आप जानते हैं, लाइट हम इसको ये 7 कलर्स में स्कैट होती है. तो उसने देख लिया क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया इस प्लांट के इर्द गिर्द थे, तो प्लांट का काम है फोटोसिंथेसिस करना. जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो फोटोसिंथेसिस के साथ साथ वहाँ से ऑक्सीजन इवाल्व हो जाएगा, वहाँ से रिलीज हो जाएगा. तो दिस बैक्टीरिया दे नीड दिस ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. तो जब उसने इस लाइट को स्कैटर किया, उस पर पास किया इस सॉल्यूशन से, तो उसने देख लिया 2 wavelengths. One is called as blue and second is called as red. यानी यम wavelength वशिम कॉस्मोस आफोस blue बाफोस red. इन कुछ यमन दोन लाइट से wavelength हम दरमियान these bacteria is aerobic bacteria यमन दरमियान जमा क्या one is called as blue, other is called as red. So he found that when he scattered this light and passed this through this suspension with Cladopora, so he observed that the aerobic bacteria they got accumulated between या around blue and red wavelength. तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये हुआ कि इनको बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत है. तो जो ही लाइट इन पर पड़ी, यहाँ तो फोटोसिंथेसिस शुरू होने लगी. जब फोटोसिंथेसिस शुरू होने लगी तो यहाँ ऑक्सीजन इवाल्व होने लगा.
जब ऑक्सीजन इवॉल्व होने लगा तो ये बैक्टीरिया जो है इनको ऑक्सीजन की जरूरत है, ये उसकी इर्द गिर्द आ गई। तो ये कहाँ पर ज्यादातर जमा हो गए, एक तो ग्रीन वेवलेंथ थी, एक रेड वेवलेंथ थी। तो उसका ये मतलब है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है बेस्ट रेट है और दैट इज एट ब्लू एंड रेड वेवलेंथ। ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इसका लाइट क्वालिटी आता है। ये ऑब्जर्व कर दिया गया कि जो फोटोसिंथेटिक रेट है या प्रोसेस है ये दो वेवलेंथ पर बहुत अच्छी होती है। वन इज कॉल्ड एज ब्लू वेवलेंथ एंड सेकंड इज कॉल्ड एज रेड वेवलेंथ। सो दिस कॉल्ड एज quality of light, on which wavelength the rate of photosynthesis is maximum or best. So this is called as quality of light. Second is called as intensity. Intensity असल जिसमें उर्दू में हम कहते हैं शिद्दत। एट नून यानी 12 बजे के आसपास बहुत ही गर्मी की शिद्दत होती है, तो उसका मतलब उस वक्त लाइट की इंटेंसिटी बहुत होती है। तो सपोज यहाँ एक हम प्लांट ले लेंगे, इससे प्लांट, तो हम इसको सुबह सवेरे लाइट में रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होने लगेगी। जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होने लगी उसके बाद लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जितनी इंक्रीज हो जाएगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल गेट इंक्रीज but if there will be maximum intensity of light, so what will happen, there will be decline of photosynthesis. अगर maximum at optimum level or we can say at optimum intensity of light, the rate of photosynthesis will be best. But if we increase or beyond that maximum, so what will happen, so there will be decrease or decline, I can say decline in the rate of photosynthesis, because ज्यादा लाइट जब होगी उसका मतलब उस वक्त टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, तो उस वक्त प्लांट से लॉस ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होगा, तो ट्रांसपायरेशन की रेट ज्यादा हो जाएगी। जो ही ट्रांसपायरेशन की रेट ज्यादा हो जाएगी तो प्लांट विल्ट होने लगेगा, ये सूख जा सकता है। तो उस वक्त ये क्या करेगा, उस वक्त ये अपने स्टोमेटा को क्लोज करेगा। तो जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल नहीं हो सकता है तो उसका मतलब फोटोसिंथेसिस रेट विल नॉट बी बेस्ट और देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी एट मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी मिनिमम, बट एट ऑप्टिमम दिस लेवल ऑफ दिस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सो देयर विल बी बेस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट बियॉन्ड द मैक्सिमम देयर विल बी decline or decrease in photosynthetic rate. So then there is duration. Then there is duration of light. Duration means the time period, and it refers to time period. Yani what time, in which time or at what time the plant will manufacture more and more food, or it will carry more and more photosynthesis. So that is called as duration. So it may vary. For example, in temperate plants may take more light or more duration for photosynthesis. In tropics they may take less time, so it depends on the climatic conditions also. So that is called as duration of light, and that refers to time period or the amount of light which is trapped by plant for photosynthesis. So this is called as light. Second is temperature. As you know, the temperature is very important factor, because as we know that as you also know that this photosynthesis takes place in dark phase as well as in light phase and dark phase. तो light phase में क्या होगा, light phase में assimilatory power बनता है ADP and LDPH, तो इसमें enzymes present है। In dark reaction जो है it depends upon enzymes, or it is enzymatic dependent reaction. Dark phase है, it is enzymatic dependent phase, जो मतलब इसमें रिएक्शन इसका इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, सो इसमें बहुत से एंजाइम्स की जरूरत है, सो डिपेंड्स अपॉन एंजाइम्स। सो एंजाइम्स जब काम करेंगे तो उनको एक मखसूस टेम्परेचर की जरूरत है। दे वर्क ऑन this that optimum, or can say optimum level of temperature. So if we take low temperature, so the rate of photosynthesis will be minimum.
But if we increase the rate of temperature, so the rate of photosynthesis can increase. But it has been observed that 25 to 35 degrees Celsius between the rate of photosynthesis is best. If we then increase beyond with 35, so rate will get decline, because at highest temperature the enzymes will stop to function. At high temperature, the enzymes stop to function. So if enzymes will stop their function, so automatically there will be no photosynthesis. तो उस वक्त photosynthesis नहीं हो सकती है. तो ये एक बात है. अगर हम दूसरी बात ले लेंगे, C3 plants की बात हम करेंगे. There are two types of plants, as I told you. One is called a C3 plant, other is called a C4 plant. तो C3 plants अगर उनको ज़्यादा टेम्परेचर हम दे देंगे तो उस वक्त यहाँ फोटो रेस्पिरेशन हो सकती है. सो एट मैक्सिमम टेम्परेचर, एज मैंने आपको ये पढ़ाया, पढ़िए फोटो रेस्पिरेशन तम साथ में 2 factors are there which are needed for a plant. One is high temperature. Second is called as high oxygen concentration. अगर ये दो हम फैक्टर्स दे देंगे तो उस वक्त जो रिबिस्को है, as I told you, रिबिस्को, दिस एंजाइम, ये उस वक्त अपनी ओरिजिनल फंक्शन खो बैठता है, तो उस वक्त इसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेस. सो एट दिस टाइम इट कैरीज फोटो रेस्पिरेशन. ये हम डिस्कस किया है, यहाँ डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं. यानी कि अगर हम हाई टेम्परेचर और हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनको C3 प्लांट्स को दे देंगे तो उस वक्त यहाँ क्या होगा, ये रिबिस्को जो है ये उस वक्त ऑक्सीजनेस में कन्वर्ट होता है. तो उस वक्त प्लांट्स, C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होती है, तो उस वक्त फोटोसिंथेटिक रेट बहुत कम होती है. तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है. तो दिस वेस्टेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस. सो दिस कॉल्ड एज, if अगर हम हाई टेम्परेचर को देंगे. अलबत्ता जो C4 प्लांट्स हैं, C4 plants they work at high temperature. C4 plants work at high temperature because आपने पढ़ा होगा उनमें C4 साइकिल भी होता है, C3 साइकिल. As I told you that in mesophil cells there occurs C4 cycle, but there is another trans anatomy called as bundle sheath. So when carbon dioxide is formed here, so this carbon dioxide is utilized in bundle sheath to carry C3 cycle. So here no wastage of carbon dioxide takes place. So they at high temperature they do not show this wastage of carbon dioxide, but C3 plants they show wastage. So in nutshell I can say, अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो at minimum temperature there will be low photosynthesis, but at optimum best rate beyond maximum there will be decline as enzymes stop their function, या C3 plants में उस वक्त फोटो रेस्पिरेशन हो सकती है. तो उसके बाद टेम्परेचर के बाद हम बात करेंगे वाटर. Then there is water. ये very important because it's the component of photosynthesis. It is component of, yeah, I can say raw material for photosynthesis. Without water there will be no photosynthesis. क्योंकि हम जब रिएक्शन लिखते हैं CO2 प्लस वाटर. तो वाटर की काम क्या है, जब वाटर इस फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होता है तो ये वाटर जो है इसको फोटोलिसिस होती है, फोटोलिसिस. तो उस वक्त ये एक तो हाइड्रोजन अवेलेबल करता है, इट एक्ट्स एज हाइड्रोजन डोनर. नंबर 1 इट एक्ट्स एज हाइड्रोजन डोनर. दूसरी खासियत it releases, yeah, oxygen is released from this water. So this hydrogen is utilized to react with this carbon dioxide, forms this glucose and oxygen comes out. So ये यहाँ बात कर रहे हैं, this very important factor for photosynthesis. तो अगर वाटर की स्कैरसिटी हो, and there is scarcity of water,
वाटर आए वारिया कम अवेलेबल, कमी आए वाटर व्हाट और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, तो उस वक्त क्या होगा इस प्लांट को? दिस इज प्लांट, सो देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, वाटर की कमी है, तो उस वक्त यहाँ से लॉस ऑफ वाटर हो सकता है ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन या होती रहेगी प्लांट में ड्यूरिंग डे, so more and more water will get lost. So but here is scarcity of water. When there is scarcity of water, so what will happen? At that time it will stop, yeah, it will close. It will close stomata. So when it will close stomata, carbon dioxide will not get enter into the sleep, so there will be no photosynthesis. So I can say water at that time on one day it stops photosynthesis, but on the another hand this survives plant during stress conditions. During stress conditions, and during stress conditions, if there is low rate of photosynthesis, but on the other hand it survives this plant during the, अगर ये उस वक्त स्टोमेटा क्लोज नहीं हो सकता है, हो जाएगा प्लांट को, तो what will happen? More and more water will get lost. So there will be wilting. There will be wilting of plant, and it will get finished this plant. So for that purposes, it closes its stomata. So this is the water, which is important factor. Last one is called as CO2, carbon dioxide. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो ए कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो यहाँ पर इसी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन के ग्लूकोज बनाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम हो तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी लो फोटोसिंथेटिक रेट। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन फोटोसिंथेसिस, वन इज कॉल्ड एज लाइट फेज, सेकंड इज कॉल्ड एज डार्क फेज। So out of these two phases, which one is rate determining step for photosynthesis? As I told you that the output of this is ATP and NADPH. NADPH, that is called as assimilatory power, and this results in formation of C6H12O6. So this direct phase needs ATP and NADPH to produce C6H12O6. तो अगर मान लो यहाँ more and more light will fall on this leaf, and more ATP and NADPH should be produced. But this they have to get utilized during this phase. यूता डायरेक्ट फेज में ज़्यादा इस्तेमाल गए स्तुति है कि आज फोटोसिंथेसिस के इस्तेमाल अगर मुमकिन है ज़्यादा इस्तेमाल गए लाइट रिएक्शन में हज गो कम वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम को तवे वन जन डायरेक्ट फेज दैट इज रेट डिटरमाइनिंग द डायरेक्ट फेज इज रेट determining factor या rate determining step during photosynthesis क्योंकि इनका बनना या इनका यूटिलाइज होना तो बनता तो है ही लाइट फेज में, इनका यूटिलाइज होना ही डिपेंड्स ऑन डायरेक्ट रिएक्शन। अगर यहाँ शुरू यूटिलाइज हो जाएंगे तो कम ही कंसंट्रेशन में फोटोसिंथेसिस भी या कम ही प्रोसेस में या फोटोसिंथेसिस रेट will be low. So these are the factors on which rate of photosynthesis depends. So by this I completed whole photosynthesis. Now we are going to start lower botany from tomorrow. So thank you very much.